अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that whether the registration of the firm is necessary and what are the disadvantages of an unregistered firm. What are the disadvantages of an unregistered firm? हमको यहाँ पे याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी आप रजिस्ट्रेशन भी कराओ. अब आपको ये चीज याद रखनी है that if you have an unregistered partnership firm, then under section number 69 clause 1, you cannot file a suit against the partners or partnership firm. यानी जिस फर्म के आप पार्टनर हो इस फर्म के अगेंस्ट आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो इफ यू आर अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म. एंड एज पर सेक्शन नंबर 69 clause 2, as per section number 69 clause 2, you cannot file a suit against any third party. सपोज आपको किसी दूसरी फर्म के अगेंस्ट एक सूट फाइल करना है तो यहाँ पे आप ये सूट फाइल नहीं कर पाओगे इफ यू हैव एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. First of all, we will do the case of Gandhi and Company versus Krishna Glass. अब इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ पार्टनर ऑफ द फर्म हुज नेम वाज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार. यानी बाकी सारे पार्टनर्स का नाम रजिस्ट्रार के पास मौजूद था लेकिन जो पार्टनर सूट फाइल कर रहा था इसका नाम रजिस्ट्रार के पास मौजूद नहीं था. अब फिर द कोर्ट सेड दैट वी विल अलाउ दिस सूट, we will allow this suit for only those partners whose names are in registry of the firm, whose names are in registry of the firm. यानी यहाँ पे सूट जो है सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स के बिहाफ पे फाइल हो सकता है जिनका नाम रजिस्ट्री में गिवन है. अब इसके बाद वी हैव द केस ऑफ कृष्णा राव वर्सेस शंकर. अब यहाँ पे होता क्या है, ए एंड बी वर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड दे हैड एन अनरजिस्टर्ड फर्म. Here A and B had an unregistered firm. Ab later on, this firm got dissolved and A sold the goodwill of the firm. A sold the goodwill of the firm to B. यानी यहाँ पे फर्म जो है ये B को बेच दी गई एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज आल्सो सोल्ड टू B. एंड यहाँ पे A और B के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ था. Here there was an agreement between A and B that A will not open the firm by the same name in that area. Will not open the firm by same name in that area. यानी सेम नाम से सेम फर्म उस एरिया में ये नहीं खोल सकता था. लेकिन बाद में जाके होता क्या है that A opened firm by the same name in that area. सेम एरिया में सेम नेम के साथ A ने फर्म खोल दी despite him selling the goodwill of the firm to B. अब B ने यहाँ पे A के अगेंस्ट एक इंजंक्शन सूट फाइल किया बट द लोअर कोर्ट डिड नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ टू बी एज इट हेल्ड दैट ए एंड बी हैड एन अनरजिस्टर्ड फर्म. यानी जो लोअर कोर्ट है इसने बी को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया बिकॉज यहाँ पे लोअर कोर्ट ने बोला कि ए और बी की एक अनरजिस्टर्ड फर्म थी एंड दैट इज वाई ए को हम यहाँ पे इंजक्ट नहीं कर सकते. लेकिन लेटर ऑन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसेबिलिटीज ऑफ द फर्म, द डिसेबिलिटीज of the firm end with the dissolution of the firm, and hence here suit of B is valid and suit of injunction will lie against A. यानी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो गई उसी टाइम उसकी सारी डिसेबिलिटीज जो है वो भी खत्म हो गई. एंड यहाँ पे जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग सेल ऑफ गुडविल ये वैलिड होगा. दैट इज व्हाई ए कैन नॉट ओपन शॉप बाय द सेम नेम इन दैट एरिया. अब इसके बाद वी हैव द केस ऑफ एस अहमद खान वर्सेस तुरुप खान. अब इस केस में क्या होता है, ए एंड बी वर टू पार्टनर्स and they purchased a car for a taxi business. अब later on, A sold this car without asking B. A ने कार B से पूछे बगैर बेच दी एंड जो कार को बेच के पैसे मिले थे ये भी A B के साथ नहीं बांट रहा था. अब later on, B filed a suit to get half of the money that A got on the selling of the car. But here A said that our firm was
unregistered. Our firm was unregistered, and hence we will not get any money in this case. As the firm is dissolved under section number 69 clause 3 of Partnership Act. Dissolved under section 69 clause 3 of Partnership Act. And hence B got the relief in this case. Up after this, we have two cases. First of all, you have the case of Virendra Garments case, and secondly, we have the case of Haldiram Bhujiawala versus Anand Ram and Sons. अब दोनों केसेस में हुआ क्या था? Here the trademark of an unregistered firm, trademark of an unregistered firm was violated. And obviously यहाँ पे this unregistered firm filed a suit against the defendants. Filed a suit against the defendants. Up here the court allowed the suit as it comes under the ambit of Trademarks Act. यानी यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा बल्कि ट्रेडमार्क्स एक्ट अप्लाई करेगा एंड दैट इज व्हाई these unregistered firms can get relief in this case. Can get relief in this case. अब इसके बाद we have the case of Ashok Traders versus Gurmukh Das Saluja. अब in this case, Supreme Court held that partners of an unregistered firm can apply for arbitration proceedings.